Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. So, today we are going to start lecture number 4 and chapter number 5, where as the heading of this chapter is laws of motion. ठीक है? चलो. Now we are going to see all these things, right? Okay, fine. There is a network issue. We are going to solve this if any network issue is there. चलो ठीक है, कोई नहीं. Okay, fine. I think my voice is audible to everyone as well as the video is visible to everyone. Fine. ठीक है. चलो. It's okay, Sanket. Both are clear. Fine. Okay, we'll start the class, my dear kids. So, hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 4, chapter number 5, and the heading of this chapter is laws of motion. Okay. So, this is physics. So, this physics is belonging to NCERT class 11 physics, and today's concept is impulsive force 5.4 impulsive force. So this is beta series, and the channel's name, the YouTube channel's name is Physics Indian Professor. So we'll start the impulsive force. So the this is a type of force that acts for short interval of time. Okay, तो ये एक ऐसा फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है. ठीक है. So this is called as impulsive force, and I'm going to give some examples. Kicking a football. ठीक है. So this is one of the example where you're going to application the force through your foot over the football for short period of time. So impact will be greater. Okay. Initially, the force will be greater, then it will comes to a 0. Yeah. Father slaps son. Umesh Pujari. Okay, very good. Father slaps son. Okay. So, striking a cricket ball. A cricket ball through a bat. Okay. So these are examples of what? Of impulsive force. चलो ठीक है. Now we are going to elaborate this. तो हम इसको थोड़ा सा elaborate कर लेते हैं. Basically this is a type of variable force. ठीक है. ये एक तरह का variable force है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. So what happening to me? इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हो भाई? Impulsive force is a variable force. ठीक है. We should know this. तो impulsive force जो है variable force है. So that always begins with 0. That begins with 0. ठीक है. Reaching maximum. So impulsive force is a variable force that begins with 0, reaching maximum. And
ending its value with 0 in short interval of time. Okay, see here, my dear kids, what I'm trying to say. Whenever we take an example of a football, we take an example of a football. So, if I elaborate this example, since a player will be going to kick a football. Okay, so the impact starts from 0. Impact starts from 0 and then maximum and again 0. You know how? ये कैसे होता है पता है? So here is the foot. ये आपका foot है and here is the ball. So before kicking this ball, the force acting upon this ball by the foot is 0. तो यहाँ पे कोई वैल्यू फोर्स का है ही नहीं, since both are in not contact with each other. But when this leg comes in contact with this football, okay, for short interval of time, तो पहले ये तो 0 था, फिर मैक्सिमम हो गया जैसे ही इम्पैक्ट में आया, जैसे ही कांटेक्ट में आया. Okay, so when leg acts upon this football, my dear kids, the football experiences huge amount of force. For what? For short period of time, dt के लिए. ठीक है, and then it goes back to zero value, क्योंकि अगर फोर्स बड़ा है तो भी तो घटेगा भी, since this football will be going to move over the surface of the earth, or else that football will be going to face the air resistance present inside the atmosphere or surroundings of the football ground. मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? So the motion of the football will get stopped by two things. One is by air resistance, and the one is through the earth surface. So definitely from the maximum value of the force, it will go for the zero value. तो पहले तो zero ही था, फिर maximum हुआ, फिर zero. So this is what they are trying to say into the thing. Yeah. So whatever type of example you can take, Samir Kulkarni. So the impact will be the same thing. ठीक है, तो impulsive force का जो impact रहेगा वो तो same रहेगा, zero, maximum and zero, and that maximum part will be acting for short period of time. So in such cases of impulsive force, ठीक है, the magnitude cannot be measured. The magnitude cannot be measured. ठीक है, तो जो केसेस impulsive forces के होते हैं, we cannot measure the magnitude. Why? Because the force will act for short interval of time. So within that short period of time, the magnitude, which is maximum of force, cannot be measured. ठीक है, so we can make the easy part for this. इसका जो measurement है, measurement of impulsive force, we can make in a different way. In a different way, वो different way क्या होता है? For example, force is nothing but impulse. जो भी आपका impulse रहता है force का, impulse of force to the time taken. ठीक है, यही रहता है. What is force? Force is nothing but impulse of force. जैसे कि force हम क्या बोलते हैं? Force का जो impulse होता है, जो
पास करता है विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। चलो ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? बिकॉज we are going to take the force average value, force average value with time t. Okay, so this is nothing but impulse of force. तो सर impulsive force का जो practical measurement part है, that is impulse of force. Because impulsive force is a theoretical concept, the magnitude of that force cannot be measured. Why? Because we are taking the small part of time where for that short period of time the force will be going to get impact more, and then again it begins to, it will tends to move towards zero value. But in case of impulse of force, we are taking the time interval as t factor, not chota wala time. Okay, so this is nothing but we are having the number of magnitudes. So number of magnitudes क्या होता है, will make the average of all of the forces. तो उसको हम कहते हैं average force. The product of average force and total time taken is called as impulse of the force. ठीक है, तो impulsive force तो ये पता चल गया कि we are taking the short interval of time to elaborate the impulsive force. But to elaborate the impulse of the force, we are taking the total time taken period, where we are making the number of forces which are acting as a average factor force. ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर द इंपल्सिव फोर्स. तो हम लोग इंपल्सिव फोर्स को क्या कर सकते हैं, इस तरह से मेजर कर सकते हैं. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? छोटा वाला टाइम फैक्टर लोगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट. यार एक सेकंड के लिए फोर्स इंपैक्ट करा, वी डोंट नो दैट हाउ मच द फोर्स इज एक्टिंग. Okay, but if we make the total time taken and average of number of force impacts, तो उसका हमको एक क्या मिलता है, एवरेज फोर्स मिलता है. सो वी आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एवरेज फोर्स एज वेल एज टोटल टाइम टेकन, विल गेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स. ठीक है, ओके, सो दिस इज ओवर. इंपल्स ऑफ फोर्स आपको पता चल गया. नाउ इंपल्स ऑफ द फोर्स क्या है? So impulse is nothing but force का एक effect है. So then impulse of the force और impulse क्या दोनों एक ही हैं सर? Yes my dear kids. So impulse of the force is nothing but you are taking the reference of force and you are showing the impulse quantity. So even writing individually impulse is indicating the same thing. ठीक है. So is impulse is vector quantity sir? Yes my dear kids. How it may be vector quantity. तो ये vector quantity कैसे हो सकती है? Because if this is the object you're hitting with your क्या कहते हो, fist, आप अपने fist से इसको hit कर रहे हो, तो इसका जो ताकत strength तो जो जाएगा inside this, so that is called as impulse. So after giving impulse to this body, so the direction of that impulse will be same as the direction of force. So that is why impulse is a vector quantity. तो impulse क्या है बच्चों? It is a vector quantity. चलो ठीक है. So now then impulse or force actually क्या है sir? Difference, how can we make differentiate? Still, do you came to know the difference between impulse and force? इम्पल्स एंड फोर्स में कुछ डिफरेंस पता चला अभी तक? मैं जो बता रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट, फोर्स इज द कॉज. ओके, सो व्हाटएवर वी गेट द ट्रेमर इनसाइड द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो जैसे मोमेंटम होता है ना इफेक्ट, जैसे मोमेंटम होता है ना इफेक्ट, वैसे ही इंपल्स होता है. ठीक है, तो फोर्स से जब इंपल्स पास होता है किसी बॉडी के अंदर, देन वी सी द
effect called momentum. So impulse is a kind of tremor, a kind of vibration through your means the strength, the strength of vibration you are passing with your fist. ओके तो फिस्ट से आपने फोर्स डाला, वो ट्रेमर उसके अंदर गया, फिर उसके बदले में इफेक्ट आपको जो दिखाई दिया, दैट इज मोमेंटम. So the direction of impulse is nothing but it is a kind of tremor, it is a kind of strength of vibration of your force. Yeah, impulse is impulse is simply tremor. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಯಾನ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗ, ಒಂಥರ ಕಂಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. The direction of force you are giving in this direction, so impulse is also going to get into that direction. So whatever our eye sees, that this hand is moving, this is momentum, ये moment कर रहा है, ठीक है, लेकिन only after impulse getting passed into it. So when you hit the hand to the space, see here, impulse is not passing through it. Why? Because there is no resistance of the opposite surface. You will observe impulse only when there is a opposite body. ठीक है, स्पेस में करो, impulse आपको नहीं मिलेगा. You are having force as well as the momentum of this hand. ठीक है, लेकिन अगर कोई अपोजिट बॉडी आ जाए, आपको यहाँ पे लगेगा कुछ, एक तरह से वाइब्रेशन होगा छोटा वाला, दैट इज इंपल्स. तो फोर्स और इंपल्स का एक ही डायरेक्शन रहेगा, एंड द इफेक्ट, दिस बॉडी विल मूव बैकवर्ड, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. क्लियर हो गया? So you should know these things. So we can say force and impulse both are one and same, both are one and same, but the feel is different. But the feel is different since you can give the unit as a same factor, same दे सकते हो आप. तो एक काम करते हैं, यूनिट क्या हो सकता है. we just made a mathematical expression here. यहाँ पे हमने एक expression बनाया था, देख लो यहाँ पे क्या है. Since force will be having SI unit, force का unit क्या था बताओ मुझे, kg meter per second square, and time taken, it is having second. So this implicates what, kg meter per second. So this is nothing but क्या है ये, मोमेंटम का क्या आता है बताओ मुझे, kg meter per second. Am I right? So this and this are nearly equal and similar, nearly equal. But impulse is a kind of tremor, momentum is the effect. Tremor ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, a kind of vibration which will be having a direction. So force का जो direction रहेगा वही tremor का direction रहेगा, impulse का direction रहेगा. Okay, and whatever the force and impulse is carrying direction, the momentum will be carrying the same direction. ठीक है, चलो, got it, very good. So at last समझ में आया. So impulse क्या पता चला हमें, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, and the unit for SI unit for that is kg meter per second. And so the dimensional formula, ठीक है, dimensional formula क्या है, so the dimensional formula is ml t to the power minus 1. ठीक है, चलो, clear, this is very good, clear. Fourth one. So as I said that कि मोमेंटम, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो इंपल्स का हो गया, मोमेंटम का भी यूनिट है, सेम है. इट मींस दैट वी कैन से दैट इंपल्स ऑफ अ फोर्स is equal to the change in momentum. ठीक है, see here,
मैं इसको थोड़ा सा, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं. फाइन. सो दिस इज द बॉडी, राइट? सो दिस इज द बॉडी एंड हियर इज द प्लेन सरफेस. ठीक है, हियर इज द प्लेन सरफेस. सो यू आर अप्लाइंग फोर्स, आपने इस पे फोर्स डाला. ठीक. सो दिस इज योर फोर्स. नाउ the impact, the impact after having force, push force over this or hit force over this, so the tremor will be going to travel up to here. Virtually matlab aankhon ko dikhta nahi, but the vibration, the vibration, the vibration of the force will be going to travel up to here. yahan tak travel karne wala hai. ठीक है. So this tremor, the strength, the tremor of the strength will be going to pass up to this point. ठीक है. So then what you can observe here, आप क्या observe कर सकते हो? You can observe this object will come and stand here because of the tremor of the strength, tremor, tremor of strength applied over the block. ठीक है, ये ट्रेमर ऑफ स्ट्रेंथ है ना, इसी को हम लोग इंपल्स ऑफ फोर्स कहते हैं. एंड व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यू नो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, दिस वाज द इनिशियल मोमेंटम एंड दिस वाज द फाइनल मोमेंटम. सो यू ऑब्जर्व P2 माइनस P1. सो इंपल्स ऑफ द फोर्स, ये जो है ना इंपल्स ऑफ द फोर्स, व्हाट इट मींस फॉर, इट्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, P2 माइनस P1 डायरेक्टली. ठीक है, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फाइन. सो आई एम गोइंग टू मेक अ इक्वेशन हियर. मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा. इंपल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. नाउ लिसन अप माय डियर किड्स. सो इफ यू सी दिस, यहां पे देखो, अगर छोटा पीरियड ऑफ टाइम है, से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, in 1 second it may have traveled this one up to this time, and for next second it may have traveled this up to this, and for another second it may have traveled up to this. फिर 4th second में इतना, फिर 5th second में थोड़ा और कम, 6th second में और कम, फिर 7th second में और कम, 8th second में और कम, 9th second में completely zero. So it will be having the number of time intervals. So this is not small time interval, ये dt नहीं है. So this is total time taken. So in total time taken, it has traveled the long length through which the small amount of forces, impulsive forces, are acting. So when we make the average of all the forces for that interval of time, for which interval of time? For t interval of time. So we can say that the average application of the force into time t. So this is nothing but impulse, impulse of the force. So this is equals to what? P2 minus P1 or PF minus PI. ठीक है, this is called change in momentum. तो अभी यहां पे क्या करोगे? Here you can put F average into time taken is equals to change in momentum P2 minus P1. तो ये जो टाइम t है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ टाइम चेंज हुआ होगा फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एवरेज फोर्स का जो भी टाइम फैक्टर है ना, तो हम इसको बोल लेते हैं, सी हियर वी कैन मेक दिस एज tf minus ti, and this is pf minus pi. ठीक है. So are you getting this, my dear kids? Okay. Now f average is equals to pf minus pi divided by tf minus ti. ठीक है. So what we get here, हम लोग यहाँ पे क्या मिलता है हमको? We can get the delta p by delta t.
So this is F average. So this is nothing but न्यूटन्स सेकेंड लॉ. देख लो आप, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके देख लो. वी कैन डिराइव द न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, एक ये हो गया. ओके, बट यहां पे क्या करता हूं मैं, आई एम गोइंग टू टेक द सेम इक्वेशन ओवर हियर. ठीक है, F average into T. I'm not going to make any kind of change. So what is P2? This is PF minus PI. So what is PF? So this is the momentum. What type of momentum? Final momentum minus initial momentum, MU. ठीक है, so this is impulse of force. So impulse of force का और एक फॉर्मूला आपको ये मिलेगा, mv minus mu. So what this stands for, ये क्या stand करता है? You can make like this also. इसको थोड़ा सा modify करके आप ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है, is that okay? As well as you can make like this कि यही force को, impulse of the force को आप F average बना के is equals to m into v minus u. Means you can make, ये आपका impulse है, so this is impulse. बहुत सारे formulas बन सकते हैं. Through these formulas only you are going to solve the n numbers of problems. So F average divided by T. So this is nothing but mass into acceleration, because change in velocity. Okay, change in velocity क्या होता है? V minus, because V is equals to U plus AT. ठीक है, so V minus U divided by T is equals to A है. ये आपको सबको पता होना चाहिए. So simply I have taken for this A. So this is F is equals to MA. देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये मिल गया. Okay, so you got this formula, you got this formula. Okay, you got as well as this formula. तो ये सारे formulas को आपको याद रखना है to solve the numericals. Fine, right? So we got this. Now a cricket player, a cricket player, a cricket player lowers his hands when catching a fast moving fast moving cricket ball. ठीक है, why? So my question is, whenever you people are playing cricket in the ground, you know what happens when the batsman hit the ball into the ground? So the players are standing, they are ready to have the fielding properly. So say for example, the ball is growing through the height of chest. So when it is going through the height of chest, and it will come into the hand of the player. So a cricket player lowers his hand when catching a fast moving cricket ball. Why? Because see here, ये किसी क्रिकेट प्लेयर का हाथ है मान के चलो आप. ठीक है, so fine. So the ball is coming by this way. Fine. If the ball is coming and you're trying to stop with the hand of yours as a player, ऐसे आपने रोकने की कोशिश की, what will happen, you know, there will be short interval of time. छोटा वाला टाइम मिलेगा आपको रोकने के लिए. So when the time span when the time span of the impact of the ball over your hand is smaller, the impact of the ball force will be greater. मेरी बात समझो बच्चों. The impulse force, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. Force is inversely proportional to the time factor. ये टाइम फैक्टर अगर छोटा होगा,
फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. मींस it will be the ball, cricket ball will be going to hit hard with very strong amount of force over your hand. ठीक है. Since both are inversely proportional, where the time of impact as well as force, जितना ये shorter period of time होगा उतना magnitude, the impact of the magnitude of the force will be greater. ठीक है. So that is called the effect of impulsive force. Now say for example, if you increases the time period, मतलब जब बॉल लेते हो तो ऐसा खींचते हो, तो टाइम आपने क्या किया, स्मूथन किया. स्मूथन किया मींस you are increasing the time impact, you are increasing the order of the time. So when you are increasing the order of the time, so the force will be going to get decrease, so the impact of the force will be going to get decrease over the hands. So maximum boys, those who have played cricket, they have seen that thing. क्योंकि बचपन में जब हम छोटे रहते थे तो हम बड़े कहते हैं ना, बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे. So they were using tennis ball, and we are learning that whenever they are catching the ball, they used to lower his hand, or they used to take their hands backside whenever they catch the ball. Am I right, my dear kids? Yes. Santosh C. Hiremat, Pratap Rajput, Rakesh Ayholi. You know, girls, how many of you played cricket professionally? I don't know. Yeah, to lower the effect. ये हाथों को क्या किया जाता है पता है? You know what? These hands will dragged back. कैच पकड़ने के बाद बॉल को कहां से कहां तक खींचा जाएगा? बॉल एक तो यहां पे रहेगा, उसको यहां तक खींचा जाएगा. Simply to increase the time period. तो टाइम को हमने इंक्रीज करा. ओके, हियर. सो टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स आप पे बहुत कम अप्लाई होना चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. ओके, व्हाई अभी पता चला. टू सिंपली release the effect of force when we increase the time period, so force will get decrease. Is that clear? Got. Okay, so we are going to see the next example. Okay, my dear kids, so this link will be going to get cut within a minute. तो हमें next example क्या लेना है? We are going to talk about spring systems. ठीक है, तो हम लोग spring systems के बारे में बात करेंगे. So we are discussing about spring systems, right? Spring systems in bus, cars and other vehicles. Okay, so why we use spring systems into bus, cars, other vehicles when these are traveling, through roads having pits. ठीक है, गड्ढे होता है ना, गड्ढे के थ्रू हम लोग, रोड के गड्ढों के थ्रू हम पास होते रहते हैं. वी वेर पासिंग थ्रू दैट. ठीक है, so you know what happened, the basic thing we are going to experience is friction of the vehicle and the impact of friction of the vehicle over the body. ठीक है, बॉडी पे जो फ्रिक्शन होता है ना व्हीकल्स के थ्रू, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट थिंग. तो साइकिल कह लो या कोई कार कह लो, इफ देयर इज अ पिट, यहाँ पे हिट करने के बाद टायर से डायरेक्ट इंपैक्ट विल बी गॉन टू द पर्सन्स बॉडी. ठीक है, सो टू अवॉइड दैट यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर्स का यूज करते हैं. शॉक ऑब्जर्वर्स सिस्टम्स, शॉक ऑब्जर्वर सिस्टम्स क्या होते हैं? स्प्रिंग सिस्टम्स होते हैं. So these spring systems, whenever used into moving vehicles like buses, cars, and other vehicles, it will elongate. It will elongate
the small interval of time into large. जो ये टाइम इंटरवल छोटा होता है ना, इतना सा, वो टाइम इंटरवल इतना बड़ा कर देता है by using spring system. So the impact of force where you're hitting with your vehicle and your weight over the pit, you'll not get back with the same strength. तो आपको सेम स्ट्रेंथ में नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल ऑफ दिस डिस्टेंस. ये जो शॉक ऑब्जर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एलोंगेट द टाइम इंटरवल. तो टाइम इंटरवल एलोंगेट होने के बाद फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है इस पे बहुत ही कम होता है, एज पर द इक्वेशन कॉल्ड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी. ठीक है, ये क्या है आपका एवरेज. एंड व्हाट इज दिस वन? यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? इट इज इंपल्स ऑफ द फोर्स. इंपल्स ऑफ द फोर्स ये तो अपने आप कम हो जाएगा. कैसे कम हो जाएगा? बिकॉज इंपल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड को इंक्रीज करते हैं तो एफ एवरेज विल बी डिक्रीज्ड. तो एफ एवरेज अगर डिक्रीज हो जाता है तो इंपल्स तो आपका यहाँ पे है. ठीक है, तो एफ एवरेज अगर नीचे गिरेगा तो इंपल्स भी गिरेगा. सो ट्रेमर यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट. ठीक है, दिस इज वेरी मच सिंपल. क्लियर हो गया? 1 रुपए का जो कॉइन होता है ना, आप हेड देख लो या टेल देख लो, both will be carrying the same value. The same way, if I'm writing f average is proportional to I, तो इसका मतलब ये हो गया कि f average पे I डिपेंड करता है किसी ना किसी तरह से. ठीक है, so sometimes you have to elaborate the equation in this way. ठीक है, तो आपको तो क्लियरली पता चल गया मैंने क्या कहने की कोशिश की. मैंने कहने की कोशिश की कि देखो भाई, एफ एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू, एफ एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे इंपल्स है. अगर ये टाइम फैक्टर छोटा होता है तो फोर्स क्या होगा? आपका बड़ा होगा. सिंस यू आर यूजिंग द स्प्रिंग सिस्टम, तो आपका टाइम फैक्टर क्या हो जाता है? बड़ा बन जाता है. देन द फोर्स विल बी छोटा. सो देन फोर्स, एवरेज फोर्स इंपल्स पे डिपेंड करता है. क्योंकि हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इनटू टी इज प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, तो आई कैसे चेंज करेगा? जो फोर्स अगर एवरेज छोटा है, सो इंपल्स इज आल्सो छोटा. योर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज स्मॉलर, सो इंपल्स इज आल्सो स्मॉलर. योर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ग्रेटर, सो इंपल्स इज आल्सो ग्रेटर. यही है इक्वेशन, बस और कुछ नहीं. गॉट? So many times why I am explaining these things, these are the concept you need to understand in a very depth way. So, um, so the next concept is all about China wares. ये China wares क्या है sir? I think you peoples have seen the plates, other food utensils, which are made up of special clays. Special clay रहता है. ठीक है, वो एक क्ले से बना रहता है, मड. रादर देन सेइंग मड, उसका कुछ एक अलग ही क्ले रहता है. आई डोंट रिमेम्बर दैट. ठीक है, मेरे को उतना याद नहीं है. तो एक स्पेशल क्ले से बना रहता है. आई थिंक पोर्सलिन, नहीं पोर्सलिन, पोर्सलिन, क्या पोर्सलिन डिश होता है? पोर्सलिन से बनाया हुआ आई थिंक पोर्सलिन. क्या पोर्सलिन एक डिश होता है या मतलब क्या होता है? पोर्सलिन प्लेट होता है या क्या होता है? इज दैट फूड यूटेंसिल और अ टाइप ऑफ क्ले? So this special type of clay which is used to made for China wares. Probably I don't know, उतना याद नहीं यार. हाई स्कूल डेज में पढ़ा था पोर्सलिन डिश करके ऐसा कुछ. Anyhow, so China wares are basically plates, food utensils, you know, whatever these are made up of. So इसको क्या करते हैं? We used to send this through the transport trucks. Transport truck से इनको भेजा जाता है from long distances. Say for example,
from Delhi to Bangalore. These utensils are sending through the what? Through the transportation. Now all have been kept here. Plates ऐसे रखे हुए हैं एक दूसरे पे, या utensils रखे हुए हैं. Basically this container containing China wares. ठीक है, जो भी food utensils, plates जो भी है. Now when the pit will observe, small pits will be observed at the roads. तो ये जो ट्रक का टायर यहाँ पे आके फंस के आगे निकलेगा. ठीक है, फंस के आगे निकलेगा इन द सेंस by hitting there at the ground it will move away. Basically ये क्या होना चाहिए? These are you know these are brittle substances. मतलब टूटने वाले चीजें रहती हैं ये सारी चीजें. It should get break. ठीक है, these are brittle substances. तो ये टूटने चाहिए. It should get break. But it will not get break. ये break नहीं होते हैं. The reason, what is the reason? We are using the what? Airtight packets, okay, or else grasses. So why we are using these things? We are using these things to simply uh, avoid the force created by jerks, or force created when the tire is going through the small pits. तो उस फोर्स के इंपैक्ट को हमें कम करना है. हाउ वी कैन डू दैट? ओनली बाय सिंपली बाय डिक्रीजिंग, है ना. टाइम को डिक्रीज करो तभी जाके फोर्स डिक्रीज करेगा. इज दैट सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आई एम सेइंग रिवर्स और करेक्ट? फट से यार, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए थोड़ा सा. टाइम इंक्रीज वी हैव टू डू सर. वेरी गुड प्रताप. तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम को घटाना नहीं है. सो वी नीड टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ द फोर्स. तो इसके लिए क्या करेंगे? एक प्लेट है तो उसके अंदर मैं एयर पैकेट को यूज करूंगा, फिर उसके ऊपर और एक प्लेट रखूंगा, इसके नीचे भी एयर टाइट पैकेट रखूंगा. सो बिसाइड दिस ग्रास, ठीक है, ड्राई ग्रास. ओके, so by using these things we can avoid the friction in between the plates, so we can make the space inside the truck frictionless space, so to avoid the friction. So brittleness kitna bhi ho, we can avoid the friction. By avoiding friction we can save the wears, and we can transport the wares from one place to another place. ठीक है, this is very much simple. Yes, very good Priyanka Rathod. So this is clear, very much clear, I think so. ये सारा चीज आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ गया. ओके, वेरी गुड. Pari Jain, Samir Kulkarni, Santoshi Hiremat, Rakesh Aiholdi, very good. Okay, so these are the best examples. Okay, so now another thing, my dear kids, many times you may have heard about old age persons deaths. जो बहुत ही बड़े होते हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, उनका डेथ हो जाता है. Okay, yeah, not because of heart disease, not because of other things. When they will go for the bath, ठीक है, बाथरूम में जाके पैर फिसल के गिरते हैं. क्या होता है? बाथरूम में जाके पैर फिसल के गिरते हैं. बाय दीज वी कम टू नो दैट कि बहुत सारे डेथ्स ऐसे होते हैं, मतलब गिर के हो जाते हैं. और एल्स आफ्टर फॉलिंग, इवन दो एट द ओल्ड एज, 82 year old ग्रैंडपा और ग्रैंडमा, ठीक है, ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग था, ये स्ट्रांग थे, बट आफ्टर फॉलिंग इन द बाथरूम
they sustained for 1 month. So after 1 month or 15 days somewhat हेड में ब्लड क्लॉट हो गया गिरने के बाद, फिर डेथ हो गया. We used to know that, we come to know that. And the reason is the floor of the bathroom is pakka. Pakka means hard, hard floor. ठीक है. सो हार्ड फ्लोर में जब गिरता है कोई भी इंसान, या स्लिपरी तो होता ही है, इट इज हार्ड फ्लोर. एंड व्हेन the person falls on the hard floor, the impact of the head over this floor will be harder. Force इस पे ज्यादा रहेगा क्योंकि this is very much hard, floor is hard, and the time of impact will be smaller. तो time of impact smaller रहने की वजह से force ज्यादा हो जाता है, तो ये बंदा गिरेगा तो हेड पे बहुत ज्यादा ताकत से लगेगा. So even though in suicide cases when person falls from great heights नीचे earth surface पे, so क्या होता है, that person acts over the surface for short interval of time. ये टाइम को हम लोग बढ़ाते नहीं है, टाइम बहुत ही छोटा होता है यहाँ पे. That is why the reason the force impact over your body will be greater, so the cause of death. Now sir, ये सारी चीजें बचपन में बचपन में हम लोग जब गिरते हैं, बाथरूम में हम गिर जाते हैं सर, पैर फिसल के गिर जाते हैं, तो हम लोगों का डेथ नहीं होता है, ब्लड आने लगता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, देन एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड वी आर जंपिंग फ्रॉम द हाइट्स. बचपन में तो नीचे गिरते हैं तो हमको कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों. in some of the cases death will occur, but in some other cases sand रहता है नीचे, sand. And here the kids will react very quickly. ऐसे पैर स्लिप होगा तो अपने आप हाथ पीछे चले जाएंगे बच्चे के, क्योंकि दिमाग बहुत ही अलर्ट मोड में होता है. in case of what, in case of childhood, alert, active. तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टच योर हैंड बैक साइड ऐसे, फिर गिरते हो. सो बाय डूइंग दैट सिंपली यू आर इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंपैक्टिंग ऑफ द फोर्स. जब टाइम पीरियड को आप इंक्रीज करते हो, द फोर्स एक्टिंग ओवर योर बॉडी विल बी शॉर्टर. इवन इन केस ऑफ सैंड, व्हेन यू make a jump in the childhood, what will happen, the impact of force of the sand over your body will be smaller, क्योंकि आपका वेट जो है ना इस सैंड पे बहुत स्लोली एक्ट करता है. ओके, द टाइम पीरियड, द इम्पैक्ट ऑफ टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर विथ योर वेट ओवर द सैंड. ठीक है, इसकी वजह से what it implicates, the force application of the sand over weight as a reaction factor will be smaller, so the impulse of the force will be smaller. So is this clear, my dear kids? So I took so many examples to make you understand the impulse of the force. So that is why in childhood many of the death will not occurs even when you people are jumping from the heights. तो इसका मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं ऊपर से जाके कूदो, ठीक है. तो बचपन में आप लोग किए रहते हो कहीं ना कहीं, फ्रॉम द कंपाउंड of the school, whatever. Okay, but don't do in the olden days, because at that time your brain will not be active, right? So is this clear, my dear kids? So up to here I have explained you everything. Fine. So tomorrow the explanation will be on law of conservation of linear momentum. ठीक है. So till tomorrow, bye bye my dear kids, take care of you. We'll meet at the same time. Jai Hind.